Bismillahirrahmanirrahim. Designing of synthesis. This is last lecture of designing of synthesis, some guidelines, guideline 5, guideline 6, linear and convergent synthesis. These are the topics of the lecture, guideline 5, 6, linear and convergent synthesis. This is the fifth lecture of designing of synthesis. Overall, this is the lecture 7. This is the seventh lecture. Now we are going to discuss. mm, Guideline 5. Some groups can be added to the ring by SN reaction. SN reactions, this is more difficult to SE. Usually, in the aromatic system, we perform electrophilic substitution reactions. But some reactions, some groups are difficult to add in the aromatic system by electrophilic substitution reaction, but they are possible by SN reaction. The SN reaction in the aromatic system, the some conditions are required. Some specific conditions, if are present, then uh, SN reactions are possible. So, just a minute. Hmm. So SN reactions are possible. Okay, this is more difficult to so here the if electrophilic substitutions are more difficult than we require in case of SN reaction, we require electron withdrawing group in presence of an activating group such as nitro or carbonyl, ortho or para to a normal leaving group such as halide. And we required for the SN reaction, the conditions are required electron withdrawing group, uh, the leaving group usually halide. So electron withdrawing group, they will be present at ortho or para position to the leaving group. Nitration is possible by nitration. Nitro group is possible by nitration and Friedel-Crafts acylation of halo compounds put the activating group in the right position of SN reaction. So activating group, कोई भी जो activating group है, you can put on the right position by nitration or Friedel-Crafts acylation of halo compounds. For example, this is the example you can understand this guideline 5. This is the compound fluorobenzene. This fluoro is the leaving group here. And the by Friedel-Crafts acylation, this is the electrophilic substitution reaction, Friedel-Crafts acylation. The acyl group will be at para position of this fluoride, para position. Now we will perform this. This is the electron withdrawing group and the para position of the leaving group. Now we are going to perform SN reaction. So this fluoride can perform SN reaction as a good leaving group in the system. SN AR mechanism. This is in presence of alkyl amine, and this fluoride will be removed and amino group will be attached. This is the SN reaction in presence of electron withdrawing group. So this amino group is not easy by electrophilic substitution mechanism, but SN mechanism it is
possible. So this presence of fluoride and to the para position of the electron withdrawing group, the SN reaction is possible. This will be changed, replaced with the uh, another activating group. Another example, this is the biphenyl COOH group, and this is the chloride group. Two groups are present. By FGI, this is the analysis. FGI, the FGI, this is SNAR by diazonium salt. This is SNAR mechanism. Nucleophilic substitution aromatic system के अंदर. This is the mechanism. By diazonium salt, by FGI, the COOH group is converted into NH2. This is the via diazonium salt. And second is chlorination. This bond will be broken. And FGI reduction, NH2 is converted into nitro group. And this nitro group, again, this is the nitration. This you will get diphenyl. You can understand by synthesis this analysis. This is the diphenyl. First, you will perform nitration in presence of nitric acid and sulfuric acid. This nitro group, because this is the aryl group, this aryl electron donating group, this is para position. Ortho position has steric hindrance. The para position will be preferred for the attachment of nitro group. The second is reduction. The nitro group is converted into NH2 amino group in presence of hydrogen and palladium carbon. And by acetic anhydride, it is converted into est anilide, NHCOCH3. This is the moderate electron NHCOCH3. It is the moderate electron donating group. So, and this is the orthopara directing group. In the chlorination, uh, the chlorination, the chlorination, and by the chlorination, yes, the two steps are merged here. In first step, chlorination, the chlorine will be here, and this is the HCl and H2O. The chlorine at the ortho position, because on one side, not both sides, because if the nitro group is converted into amino group, nitro group is converted into amino group. If you are using amino group, then both position will be accommodated by chlorine. But NaCOCH3, only one position is accommodated by chlorine, and by the hydrolysis, it will be removed, and it is just like a protecting group. NaCOCH3 is a protecting group and decrease the reactivity of the system. NaCOCH3 is converted into amino group by a second step, hydrolysis. Then you will obtain NH2 ortho combination with chlorine. Sodium nitrite, this NH2 group can be converted into diazonium compound by using sodium nitrite and SCl. It will be converted into diazonium compound and triple bond N positive. And by using copper oxidation number one cyanide, you can convert into diazonium into cyano group, and by the sodium hydroxide hydrolysis, it is converted into COOH2. It is your target molecule. Again, this is diphenyl by nitration, and the reduction of nitration convert an amino group. By acetic anhydride convert anilide. Anilide is the moderate activating group, because uh, we require chloride at one ortho position. So the chloride will be attached at one ortho position. Again, by the hydrolysis, anilide converts into amino group, convert into diazonium compound. The diazonium compound is converted into cyano group by using copper cyanide. This is the reaction of diazonium compound by with the copper cyanide, and the hydrolysis of cyano group is converted into COOH group. It is your target molecule. So this is the FGI most of the time used.
The guideline 6. If a series of reactions must be carried out, start with one that gives a single product. बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो हम बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कोशिश करेंगे ऐसा स्टेप लें जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बने, यानी एक रिएक्शन हो रहा है उससे कई प्रोडक्ट बनती हैं, हमारी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, हमारी जो टारगेटेड प्रोडक्ट है वो भी बन रही है, कुछ और भी बन रही है, लेकिन हम ऐसे रूट लेंगे जिससे हमारी सिंगल प्रोडक्ट बने, यानी दो प्रोडक्ट बन रही हैं, तीन बन रही हैं और हमारे टारगेटेड प्रोडक्ट इज इंक्लूडेड, तो हम ऐसा लेंगे जिसमें हमारी ही बने ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे स्टेप्स को हम चूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कंपाउंड, नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनालिसिस. This is three substituents: ethoxy group, methylene chloride, and nitro group. And by the analysis, you have two options, A and B. First, nitration. पहले आपने यदि नाइट्रेशन आखिर में करवानी है, पहले आपने यहाँ पे नाइट्रेशन को अलग किया. अब आ गया सेकेंड स्टेप में मिथाइलिन क्लोराइड को अलग किया, इथॉक्सी. मैंने कहा था इथॉक्सी को ऐड करना मुश्किल होता है. आपको इथॉक्सी बेंजीन मार्केट में अवेलेबल होता है, हम इसी को मार्केट से उठा लेते हैं. अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि पहले मिथाइलिन क्लोराइड को आपने क्लोरोमिथाइलेशन आपने की और सेकेंड स्टेप में नाइट्रेशन की. ये दो आपके पास ऑप्शन है. हम ये कह रहे हैं कि बी इज बेटर देन ए. व्हाट इज द रीजन बी इज बेटर देन ए? वजह क्या है? अच्छा, अगर हम देखें, दिस इज द इथॉक्सी बेंजीन, पहले हम इसकी क्या कर रहे हैं, क्लोरोमिथाइलेशन. क्लोरोमिथाइलेशन हमने की, क्लोरोमिथाइलेशन से हमें नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन इथॉक्सी बेंजीन, अब ये आ रहा है मिथॉक्सी क्लोराइड, ठीक है. और उसके बाद नाइट्रेशन जो आएगा, ठीक है, ये तो ऑर्थो डायरेक्टिंग है, लेकिन नाइट्रेशन जो है इसके लिहाज से ऑर्थो और पैरा पे आना चाहिए एक बार, और इसके लिहाज से जो है वो पैरा पे आना चाहिए. दो इसका इफेक्ट अलग है, इसका अलग है. इसमें क्या है, इथॉक्सी बेंजीन से पहले आपने नाइट्रेशन कर ली, पैरा पोजीशन पे आ गया. अब इसका मेटा इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, इसका ऑर्थो इफेक्ट भी यहीं हो रहा है, और ये मिथॉक्स क्लोरोमिथाइलेशन यहाँ हो जाती है. तो बी इज बेटर देन ए. बी से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट्स के चांसेस हो रहे हैं. ये आपके पास इथॉक्सी बेंजीन है, आपने इसकी नाइट्रेशन पहले कर ली, फिर आपने इसकी फॉर्मेल्डिहाइड और HCl जिंक क्लोराइड से क्लोरोमिथाइलेशन कर ली. तो नाइट्रो का जो इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन ये है, इथॉक्सी का भी ऑर्थो पोजीशन ये है, तो दोनों का इफेक्ट सेम है. यहाँ आपकी टारगेटेड प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ईल्ड ज़्यादा आएगी, 70%, 5% ईल्ड. नाइट्रेशन माइट ऑक्सीडाइज डाइक्लोरोमीथेन टू CHO और COOH. ये भी एक है कि नाइट्रेशन अगर आप बाद में करवाएंगे तो ये जो CH2Cl है, दिस वन, इसको ये ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना. CHO और COOH में ऑक्सीडाइज कर सकता है नाइट्रिक एसिड, तो इसलिए इसको भी हम अवॉइड करते हैं. द सिंथेसिस वर्क्स वेल इफ नाइट्रेशन इज कैरिड आउट फर्स्ट. तो पहले हम नाइट्रेशन करें. पैरा प्रोडक्ट टू बी मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम आइदर रिएक्शन ऑन ईथर, ठीक है. तो हम अमूमन हमें जो इथॉक्सी की जो पैरा पोजीशन होती है वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होती है, और यहाँ पे इसको पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन आपको चाहिए, तो ये इसकी मेजर प्रोडक्ट होती है. तो इथॉक्सी बेंजीन को अगर आप नाइट्रेशन कराते हैं तो ये भी इसके लिए सूटेबल हो गया, और फिर जब आप इसको क्लोरोमिथाइलेशन कराते हैं तो फिर वो दोनों के लिए सूटेबल हो गया, क्योंकि इथॉक्सी की पैरा पोजीशन फिल हो चुकी है और अब वो ऑर्थो पे जाएगी. इसलिए कि हाँ, ईथर इथॉक्सी आर्थो को एकोमोडेट नहीं करता ड्यू टू स्टेरिक हैंडनेस. अब लेकिन यहाँ क्योंकि पैरा फिल है तो वो आर्थो को एकोमोडेट कर रहा हो. दूसरा, ये हमारी गाइडलाइंस तो खत्म हो गई, काफी चीजें इसके अंदर आ गई. लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस की हम बात करते हैं. लीनियर सिंथेसिस क्या है और कन्वर्जेंट सिंथेसिस क्या है? Linear synthesis and conversion are two ways in which a chemical synthesis can be performed. The key difference between is longer and less efficient, whereas conversion synthesis is shorter and more efficient. What is the reason? This is the example. This is the example of linear synthesis.
यू आर गोइंग टू परफॉर्म फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, चलते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चल C10 हो गया, C12 हो गया, C14, यानी चेन बढ़ रही है, एक रिएक्शन है, चेन बढ़ती चली जा रही है, C16 तक आ गया। ठीक है, ये C16 तक आ गया। अब ये ईल्ड आती चली जा रही है, 21% ओवरऑल ईल्ड, ईल्ड कम होती चली जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपने कन्वर्जन सिंथेसिस पहले C से 2 मिलाया, 4 6 8, यहाँ भी मिलाया, फिर दोनों को कंबाइन कर लिया, अब ये 16 आ गया, ये 41% ईल्ड आ रही है। तो इसमें स्टेप्स भी कम लगे, इसमें स्टेप ज़्यादा हैं, यहाँ से शुरू किया, कम होता चला जा रहा है कंपाउंड, यकीनन उसकी ईल्ड कम आएगी। और एग्जांपल देखते हैं, ये एक कन्वर्जन सिंथेसिस के एग्जांपल है। आपने ए से बी, सी और डी पे एक आपने रूट ये लिया, दूसरा आपने लिया ई एफ जी एच, ये दोनों दोनों डी और एच को मिलाया, टारगेट मॉलिक्यूल अचीव। अच्छा, ईल्ड ओवरऑल कम होती चली जाती है, 80% थी, यहाँ 64%, 51%, 41% रह गई। लीनियर सिंथेसिस में आप चले ए से बी, सी डी, डी से ई एफ जी एच, करते करते आप पहुंचे, ईल्ड कम होती चली जा रही है ओवरऑल, यहाँ पहुंचते पहुंचते 16.8% रह गई। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, मिसाल के तौर पे आप कन्वर्जन सिंथेसिस में आपका ये स्टेप खराब हो गया, यहाँ सी से डी में कन्वर्जन खराब हो गई, तो ये रूट खराब हुआ, ई से एच तो आपने बना लिया, अब दोबारा से आप ए से आएंगे, कि आपका ये तो यहाँ पे आके डी खराब हो गया है, तो अब दोबारा ए से शुरू कर लेंगे। यहाँ क्या है, आपने चलते गए, ई खराब हो गया, अब दोबारा ए से शुरू करें। अगर आपका यहाँ पे जी तक कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर ए से शुरू करें, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रॉब्लम आ जाती है तो दोबारा से शुरू करना मुश्किल होगा। इसलिए छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे रूट्स बनाएं, दो, एक मॉलिक्यूल बना लिया, दूसरा बना लिया, उनको कंबाइन करके फिर आप आगे बढ़े, फिर एक और आपने रूट लिया, वो 3 स्टेप में एक मॉलिक्यूल बनाया, यहाँ 4 स्टेप में बनाया, उनको कंबाइन किया और नैरो हो गए। तो कन्वर्जेंट सिंथेसिस ऑलवेज बेटर। जैसे यहाँ एक बात आ रही है कि इसकी एफिशिएंसी जो है, जो कन्वर लीनियर सिंथेसिस की लो है, कन्वर्जेंट सिंथेसिस की एफिशिएंसी हाई है, ये ज़्यादा लॉन्गर प्रोसेस है, ज़्यादा लेंदी है, कन्वर्जेंट सिंथेसिस शॉर्टर है, लोअर देन एक्सपेक्ट, ओवरऑल यील्ड इसमें एक्सपेक्टेड जो आप कर रहे हैं उससे लोअर आती है, इसमें हायर आती है। तो ये थोड़ा सा एक दोनों का कंपैरिजन है। हम कोई भी सिंथेसिस करने जा रहे हैं तो हम देखें कि हम कन्वर्जेंट सिंथेसिस को वी ऑलवेज प्रीफर। जी, कोई सवाल नहीं आता? जी, कोई बात पूछनी है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, चलें, वाली क्लास मैंने ख़त्म कर दी, नमाज के बाद अगली क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? हेलो। जी सर, अगली क्लास किस टाइम स्टार्ट होगी? बस 5 बजे से पहले ही, 5 से 5 मिनट कम होंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने वो वर्कशॉप का आप लोगों को शायद आपको पता चला होगा, हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं न्यूट्रिशंस के ऊपर, एक छोटा सा वर्कशॉप है। उसमें फॉर्म मैंने भिजवाया, फॉर्म मुझे सेंड कर दें, पेमेंट वहीं पर ही हो जाएगी, लेकिन बहुत कम सीट्स हैं क्योंकि हंड्रेड्स हमारी कैपेसिटी है। हमारा एक क्लिनिक है, हर्बल क्लिनिक, डिफेंस फेज 7 के अंदर, वहाँ एक 2 ढाई घंटे का एक वर्कशॉप है। उसमें आप लोग नॉमिनल से चार्जेस हैं जो वहीं होंगे। फॉर्म पहले मुझे सेंड करना होगा क्योंकि हम सिर्फ SOPs की वजह से 25-30 से ज़्यादा लोगों को नहीं ले रहे हैं ना, 25-30 लोग होंगे बस। उस वो सिर्फ अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर ग्रुप बना लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे उनका कर लेंगे। एक वक्त में 25-30 लोगों से ज़्यादा नहीं होगा, एकोमोडेट नहीं करेंगे हम। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भेज दें और फिर उनको इन्फॉर्म कर देंगे। वहाँ पे मैप भी भिजवा देंगे, गूगल मैप के ज़रिए से उनको लोकेशन भिजवा देंगे, वो वहाँ पहुँच सकते हैं। सर कमिंग सैटरडे को ये प्रोग्राम है इंशाल्लाह। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्रोग्राम भी आपका, नेचुरल प्रोडक्ट से कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स के ज़रिए से आप कैसे केयर कर सकते हैं, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, उस पर आपका प्लान, डाइट्स क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात भी होगी, कुछ चीज़ें भी डिस्कस होंगी। ठीक है, जो इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।